students, welcome to ASL English Club and I hope you are doing well. In today's video, we are going to talk about some things that you should not do if you want to speak better English. Don't do these things to speak English fluently. Do you want to speak English fluently? I know, of course you do, or else you would not be watching this video today. Friends, many people start with passion and zeal to speak good English and to upgrade their career in life. But soon, discouragements and hopelessness take control of them, and they are back to square one. I'm going to share today with you what you should avoid if you want to be successful in speaking fluent English. And this comes from my 22 years of experience in teaching English and not from any head knowledge. इसलिए यदि आप अंग्रेजी फर्राटेदार बोलना चाहते हैं तो आप इन गलतियों को कभी ना दोहराएं। तो फ्रेंड्स, यदि आप बेहतरीन अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो मेरे इन 4 बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा and that will help you in your English learning endeavor. So buckle up. We are going to take off. Well, here is the first one जो आपको नहीं करना चाहिए. Don't fall prey to bogus claims that says speak English in 10 days. 10 दिन में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलिए. Videos हैं, books हैं, articles हैं. There are a lot of places where people claim that you could speak फर्राटेदार English in 10 days. जब इस प्रकार की कोई वीडियो या आर्टिकल या बुक्स को आप देखते हैं जो ये क्लेम करते हैं कि 10 दिन में या 5 दिन में या 20 दिन में आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले हैं, यदि उनके टिप्स को आप यूज करें, ये 2 चीजें करने की कोशिश करते हैं. Number 1, either they are trying to sell you their products by fooling you, because even they themselves know that it's not possible. Or they mean to teach you some practical ways in 10 days that will help you to learn English the rest of your life. लेकिन 10 दिन के अंदर आप अंग्रेजी सीखने की ये जोश को देखकर आप कहते हैं कि I should give my 10 days and आप चलते हैं and बाद में आपको पता चलता है. So when you see this kind of resources and get excited, you buy those products and you watch those videos and give your 10 days and later you realize that nothing has happened as you had expected, you get discouraged. ये समझना जरूरी है कि language learning एक process है and not an event. A child never learns a language in 10 days. As it lives its life in that language, he or she picks up the language up without even knowing he or she did it. So, don't run after shortcuts. Try to do it right, and you will not even notice when you acquired that language. हमारे अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस प्रकार की प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करना है. लैंग्वेज लर्निंग एक शॉर्टकट नहीं कि ऐसे कोई ड्रामेटिक कोई जादुई टिप्स आपको मिल गए और उससे आपका अंग्रेजी 2 दिन में फर्राटेदार हो गया. नो, इट्स ए प्रोसेस. You have to work on that process. Not difficult. There are many tips that are very helpful. और आपको वो helpful tips को लेकर rightly आपको right approach को adopt करना होगा जिससे you speak better English. But be very careful of learning English in 10 days by just applying something. It's a lifelong process and you will get it as you continue learning the language. Here is the second mistake you should avoid. Never focus on speaking over listening. खाली बोलने के लिए इतना उतावले ना हो जाएं कि आप सुनना भूल जाएं. Friends, sometimes we are so focused on speaking English as soon as possible that we are trying every way possible to memorize some words or to say them aloud or practice some sentences. While speaking from the very get-go is very important, it should never overpower our listening habit. Remember, जब एक बच्चा 18 महीने से 2 साल तक का होता है, only then he is able to speak
2 to 4 word sentences. इसका मतलब 18 महीने से 2 साल तक एक बच्चा सुनता रहता है and only after that 2 से 4 words के sentences वो बोल पाता है. And that's why listening comes first, then comes speaking. तो अपने बोलने में जितने आप एक्साइटेड हैं ये मत भूल जाइए. Unless you listen, बोलना नहीं आएगा. And that's why हम कहते हैं listening is like depositing and speaking is like withdrawing. So the more you deposit, the more you can withdraw. जितने पैसे आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे जरूरत पड़ने पर उतने ही तो निकाल सकेंगे. आपने डिपॉजिट ही नहीं किया अपने अकाउंट में और आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बैंक वाले देंगे क्या? And that's why if you never find ways to deposit and keep withdrawing it, it will soon run dry. Even the scripture says, right? He who is so sparingly will reap sparingly also. जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा. जो थोड़ा डिपॉजिट करेगा उसको थोड़ा ही बोलने का मौका मिलेगा. And that's why when you listen, you are depositing more vocabulary, right pronunciation, intonation, stress syllables, the way to say. They will be useful for you when you want them. So you are never wasting your time when you listen to English in any situation. So keep listening. Listening is a very good activity of learning spoken English or any language. Let me take you to the third mistake that you should never commit if you want to speak for Rajadar English. Here it is. Never focus on grammar over spoken production. Grammar के ऊपर इतना जोर मत डालिए. आपका बोलना important है grammar से बढ़कर. Many language teachers teach grammar in their spoken English classes. Even many students approach me requesting to teach them grammar so they would be able to speak better English. They hope that they will be able to speak in English once they know the syntax. But friends, that's not true. I myself have gone through every single page of around 70 English grammar books written by Indian authors and the authors from around the world. And I myself have written several English grammar books. But मैं आपको बताना चाहूँगा, learning English grammar does not help you to speak English. Now, यदि आप किसी competitive exams का prepare कर रहे हैं, if you are trying to crack a competitive exam or write an entrance test, grammar definitely would help you. And then जब आप एक level में आ जाते हैं, अपने language को थोड़ा higher standard का बनाने के लिए, mistakes को समझने के लिए grammar की जरूरत पड़ती है. And definitely I would speak to you in days to come in another video about the importance of English grammar. लेकिन जान लीजिए, if you are focusing more on grammar and are not focusing at all to speak, even when you learned all the grammar, you would not be able to speak better English. इस कारण आपको अंग्रेजी बोलने के लिए ग्रामर काफी नहीं है. You got to also start speaking. So, why is that? ग्रामर क्यों अंग्रेजी बोलने में मदद नहीं करता? Well, language is made for life. Life is not made for language. अंग्रेजी जिंदगी में यूज करने के लिए है. जिंदगी अंग्रेजी के लिए नहीं बनी है. And so, जब आप एक लैंग्वेज को वास्तविक जीवन से आप अलग कर देते हैं, that language almost lifeless, insipid and unproductive हो जाता है, dead हो जाता है. इसीलिए उसी लैंग्वेज के लिए अपनी जिंदगी को थोड़ा अलग करके 10 मिनट या 1 घंटे किसी क्लास में या किसी जगह बैठने के बजाय लैंग्वेज को रियल लाइफ सेटिंग में लेके आने की कोशिश करिए. एंड हियर इज अ ट्रिक. जब आप अंग्रेजी लैंग्वेज को अपने लाइफ के साथ एम्बेडेड कर देंगे ना, आई वुड प्रॉमिस आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने से कोई आपको नहीं रोक सकता.
इसीलिए ग्रामर क्या करता है, लैंग्वेज को रियल लाइफ से निकालकर एक थ्योरी में आपके सामने पेश करता है। And that's why उसका सेंस नहीं बनता, और उसे रियल लाइफ सेटिंग में जब बोलने की बारी आती है, आपका मुंह और you get tongue tied, जीभ बन जाता है, आगे नहीं होता। And that's why I always say grammar is not more important than your speech production. अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। तब तक के लिए आप वॉच करते रहिए। But let me give you one more mistake that you should avoid while फर्राटेदार अंग्रेजी के चाहत आप रख रहे हैं। And this is this: never wait to speak till you get better at speaking. कुछ लोग जब तक वो अच्छे से सीख ना जाए और कॉन्फिडेंट ना हो जाए, तब तक वो बोलना शुरू नहीं करना चाहते। Because you will never get better at speaking unless you start speaking. So many people are passionate about learning new words and new ways to talk in English. They memorize a bunch of words from a dictionary, or they read newspaper and try to pick out different words, and they learn the grammatical constructions and are confident about noun declensions and verb conjugations, but they never speak in English. आपने शब्द रूप, आपने धातु रूप, आपने जो वर्ब के बारे में, क्रिया के बारे में आपने सब कुछ सीख लिया, आपने मेमोराइज कर लिए कई सारे वर्ड्स, लेकिन आप बोलना ही नहीं शुरू कर रहे हैं। और बहुत से लोग तो ये सारे एक्सक्यूजेस देते हैं, उनके लिए ये सारे बहाने हैं नहीं बोलने का। आई डोंट हैव एनीवन टू स्पीक विद, किसी के साथ बात करने के लिए मेरे पास कोई है ही नहीं। आई डोंट हैव इनफ वर्ड्स येट, मेरे पास पर्याप्त शब्द अब तक नहीं है। एंड दैट्स व्हाई आई गेट स्टक इन द मिडल, सो आई डोंट वांट टू स्पीक, मैं एम्बैरेस फील करता हूं। आई डोंट नो एनी इंग्लिश जिनके साथ मैं बातचीत कर सकूं, एंड दैट्स व्हाई मेरे इंग्लिश का स्टैंडर्ड उतना हाई नहीं है। आई फील स्कैर्ड और आई फील नर्वस और शाई टू स्पीक इन इंग्लिश, एंड दैट्स व्हाई मैं नहीं बोल रहा हूं। एंड माय फ्रेंड्स समझते हैं, when my friends think that I'm trying to show off when I speak in English, and that's why I don't speak in English. और कुछ लोग तो कहते हैं I want to get better, and only then I will start speaking in English and I would surprise my friends and colleagues one day. चुपचाप रहूंगा और सीखता जाऊंगा, और एक बार ऐसे मुंह में खोला और मेरे सारे कोलीग्स और फ्रेंड्स देखकर दंग रह जाएंगे। I would surprise them. Do these excuses sound familiar to you? यदि हाँ, तो you gotta do something. You need to remove these hurdles today and find ways to speak English from today on. If you want to be among the ones that get to the finishing line, you got to start speaking from today on, or else you will also be quitting soon. मेरे next video में I'll be bringing some creative solutions to some of the struggles you are experiencing. Stay tuned. Remember, avoid these 4 mistakes. Mistake number 1: don't fall or prey to bogus claims. Mistake number 1: आप वो bogus claims का शिकार ना बन जाइए जो कहते हैं 20 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर तुम ये कर लो तो तुम्हारा अंग्रेजी फर्राटेदार हो जाएगा. They are not true. They might give you some tips, and unless you work on those tips your whole life, it's not going to be possible. And that's why lifelong journey है हम सबों के लिए, अंग्रेजी सीखने का है, and just embed कर लीजिए लाइफ के साथ, and I will tell you it's not going to be that difficult. I'm going to bring more solutions to you how to avoid these problems. Second में हमने बताया था क्या? Never focus on speaking over listening. स्पीकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला दिन से ही हमें बोलना होगा, लेकिन सुनने के काम जितने कम करोगे, जितना कम सुनोगे, उतना लैंग्वेज डेवलपमेंट उतना ही कम होगा. जितना अधिक सुनते जाओगे उतना अधिक ही सीखते जाओगे. हमने क्या कहा? The more you deposit, the more you speak. जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा काटेगा, जो थोड़ा बोलता है वो थोड़ा काटेगा भी. The third one that I spoke to you, never focus on grammar over spoken production. ग्रामर इंपॉर्टेंट है और आपको कभी ना कभी जो उसके इंफॉर्मेशन जरूर मिल जाएंगे, एंड आजकल बहुत ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन ग्रामर इज नॉट फर्स्ट टू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश. एक बच्चा जब अपने लैंग्वेज बोलना शुरू करता है, ग्रामर का कुछ भी उसे नहीं पता रहता, फिर भी वो सक्सेसफुली सेंटेंसेस कंप्लीटली बोल लेता है. एंड दैट्स व्हाई स्पीकिंग इज फर्स्ट.
Take all the hurdles away and speak. The fourth hurdle हमने बताया था, never wait to speak until you get better at speaking. क्योंकि जब तक आप बोलना ही नहीं शुरू करोगे, आप बेटर कभी बन नहीं पाओगे. इसीलिए from day one start speaking. अगले वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कैसे कैसे सिचुएशन क्रिएट किए जा सकते हैं